close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 बजे से। एंड मैं उठ चुकी थी, मैंने शावर ले लिया और मैंने लाइव भी किया आज। एंड मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे जाना है किचन के अंदर में पनीर भुर्जी की सब्जी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो आज पनीर भुर्जी की सब्जी बना रही हूँ वो बहुत ही इजी सिंपल है एंड बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में वो घर में बहुत ही आसानी से बन जाती है एंड बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो आप एक बार वो सब्जी को जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको उसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो मुझे आप बताना, मैं आपको मेरे कुकिंग चैनल में बता दूंगी। तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं, फटाफट बनाते हैं पनीर भुर्जी की सब्जी। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. फ्लैक्स सीड का जेल निकाला है घर पे एंड ये हेयर पे लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
अगर आप में से किसी को जानना हो कि फ्लैक्सीड का जेल मेरी मम्मी कैसे निकालती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मॉम कैसे निकालती है। ये फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं हम एंड हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जानना चाहते हो अगर किस तरीके से इसको यूज़ करना है तो भी आप मुझे बताना ज़रूर। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 एंड मेरी जो मम्मी है आज मैं घर में जो मूंग की दाल की कचौड़ी होती है, खस्ता कचौड़ी, वो बना रही है। मसाला मम्मी ने कल बना के रख लिया था, तो ये देखिए ये कचौड़ियाँ, कुछ कचौड़ियाँ मम्मी ने तलने के लिए रख दी है। एंड मम्मी बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बना लेती है। एंड अगर आपको ये कचौड़ी कैसे बनाते हैं पूरी रेसिपी जाननी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ में ज़रूर मेरे कुकिंग चैनल में शेयर करूँगी। एंड ये अभी धीमी आंच पे मम्मी ने फ्राई होने के लिए रखी है। एंड ये देखिए, और मेरी मम्मी कचौड़ी का मसाला कचौड़ी के अंदर भर रही है। इसी तरीके से मम्मी ने सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लिया। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो रही है। कचौड़ी को हमेशा मम्मी मंदी आंच पे चलती है क्योंकि इसमें मैदा होता है एंड मैदा जो है ऊपर से जल जाता है लेकिन अंदर से कच्चा ना रहे, इसलिए मम्मी इसको मंदी आंच में तलती है। फ्रेंड्स हमारी जो कचौड़ियाँ वो तैयार हो चुकी है। जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया तो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय व्लॉग, शेयर माय व्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो।